बाद मैं पहुंच चुका हूं गाड़ी साफ़ कराने। तो सोच रहा था गाड़ी साफ़ करानी है, टाइम ही नहीं लग रहा था। फाइनली आज टाइम मिला है। सबसे वैसे तो मैं गाड़ी करवाता हूँ साफ़ हमेशा कहीं और से, पर आज वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने सोचा चलो आज यहीं से करवा लेते हैं। और अभी भैया लगे हुए हैं साफ़ करने में। पहले वैसे मैं 2 व्हीलर यहाँ से करवा चुका हूँ, कई बार मैं अपनी 2 व्हीलर यहाँ से साफ़ करवाता था, पर मेरे को गाड़ी का कोई एक्सपीरियंस नहीं। चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है भैया गाड़ी को किसी जगह पे लगाएंगे ताकि हम अच्छे से वॉश कर सकें इसको। तो गाड़ी लग गई है अपनी जगह पे और अब आप ये देख सकते हैं, ये है इंजन की हालत। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है इंजन, और इसलिए मैंने बोल दिया कि इसको भी वॉश कर ही देना। भाई साहब क्या बुरी हालत हो रखी है इसके अंदर से। तो गाड़ी का काम शुरू हो चुका है। पहले मैट्स होंगे, उसके बाद अंदर से गाड़ी वैक्यूम होगी, फिर होगा इंजन साफ।
your day and ask you how it is. फेमस हो जाएगा चाय चाय बनेगा। तुम भी हो रहे हो। आज आपको फेमस हो जाएगा अंकल। तो गाड़ी हमारी धुल चुकी है, फोम वॉश, वैक्यूम वॉश, इंजन वॉश सब कुछ हो चुका है। अब बारी है साफ़ करने की, इंटीरियर क्लीनिंग की। अगर कोई मेरा यार दोस्त यहाँ पे आके गाड़ी क्लीन कराना चाहता है तो करा सकता है। अभी तक जहाँ मैंने कराई है बहुत अच्छी कर रहे हैं सर्विस, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी साफ़ हुई है, मैंने अच्छी तरह देखा है, डिटेल में साफ़ की हुई है। अभी हमारे आए बोल रहे भाई
इसे कपड़ा मारी मानो थैंक यू यार सारे हो, थैंक यू। These guys did a fantastic job and I'm sharing the final clips now. आज का व्लॉग कर रहा हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। गाड़ी हमारी धुल के रेडी हो गई है, तो देख सकते हो। अब हम चले घर पे।